चलिए यहाँ पे आप टॉपिक डालिएगा। रेट एक्सप्रेशंस फॉर रिएक्शन इन्वॉल्विंग गैसेस ओनली। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, जब गैस रहेगा देन हाउ वी आर गोइंग टू डील विद देम, राइट। फर्स्ट पॉइंट एंड विच इज गोइंग टू बी आवर रूल बेसिकली, if a reaction has that involves only gaseous species, then we can use pressure of gas instead of concentration. ठीक है, instead of concentration what we can use the pressure of gas also. Now please remember I am saying we can use, है ना, I am not saying we must use. What I am saying we can use, ये भी use किया जा सकता है. So we all know what is the how to solve questions and how to do questions if the concentration is given or if the mass is of a particular substance is given. But if they have given pressure, then how we are going to do this? Please write. सवाल में कुछ इस तरह से इंफॉर्मेशन दिया रहेगा आपको. For a reaction SOCl2, rather SO2Cl2, it gets converted to SO2 and Cl2. ठीक है, all of these are what gaseous species. This is also a gas, this is also a gas, and this is also a gas. So they will say that initially the pressure was found to be 0.5 atm. Then they will say after 100 seconds, the pressure was found to be 0.6 atm. It was found to be 0.6 atm. They will ask you calculate the partial pressure of or rather they will say calculate the they will say calculate the rate constant for this reaction. Calculate the rate constant, इसको पहले करेंगे for this reaction. सवाल लिख लिया आप लोगों ने? यस नो प्लीज टेल मी. Yes, sir.
चलिए ठीक। नाउ सी, आपके पास रिएक्शन क्या है, SO2 और Cl2. आई एम कॉपिंग दिस रिएक्शन. नाउ व्हेन टाइम वाज 0, है ना, इनिशियली हम लोगों ने देखी 2 बार प्रेशर को नापा है ना. एक इनिशियली है, इनिशियली इट वाज 0.5 atms एंड एक बार क्या था 0.6 atm. तो ध्यान रखिएगा जरा, जब ये आपका इनिशियली हम लोगों ने किया, क्या क्या, इनिशियली व्हेन आई मेजर्ड द प्रेशर, then the pressure will only be because of what? Just a second. Yeah. So initially what will be there? This will be the initial pressure only because of SO2 Cl2, and there will be no pressure because of SO2 and Cl2, right? SO2 Cl2 gas की वजह से there will be some pressure, but products की वजह से कोई भी pressure वहां पे नहीं होगा. Is this clear, Saad and Rabia? Please tell me. Initially. Yes, sir. Okay. Now, next thing that you have to do is the change. What is changing? Now, for each mole of the reactant, I am getting 1 mole of product of SO2 and Cl2. That means Pi minus some pressure. Some pressure will be removed. और अगर आप इसको x मानना चाहें, आप इसको x भी मान सकते हैं. But I am writing P just to show you that we are getting pressure. Now, if I am reacting 1 mole of SO2 Cl2, then I am getting 1 mole of SO2 and 1 mole of Cl2. Can all of you see that? Yes or no? Please tell me. Rabia and Saad. So when P mole is reacting, rather आप ये देख लीजिए, हम माइनस P कर रहे हैं. माइनस P मतलब P mole is reacting, then what is going to happen? I will get P mole of SO2 and P mole of Cl2. ठीक है, तो इक्विलिब्रियम दैट मींस आखिर में क्या हो जाएगा? I will add this Pi minus P हो जाएगा, and then from here I will get P and here I will get P. So this is known as I stable, जो इक्विलिब्रियम में शायद आप लोगों ने पढ़ा हो. Initial is Pi, that will be only because of the reactant. Then due to product there will be 0 pressure and 0 pressure. Change, what is happening? The reaction is happening. So the reactant is decreasing. How much it is decreasing? Minus P. And how much product is getting formed? Product form हो रहा है आपके पास P and P. So equilibrium में मतलब initially we had Pi. ये सारा मिट गया क्या? Sorry. Pi minus P हो जाएगा और 0 plus P कितना हो जाएगा? P. 0 plus P will be P. So this is the total pressure at equilibrium. Now Pi is equal to how much? Pi is equal to 0.5 atm, जैसा कि इन लोगों ने बताया हुआ है, राइट? देखिए 0.5 atm. उसके बाद उन लोगों ने क्या बताया हुआ? टोटल प्रेशर आफ्टर 100 सेकेंड्स. दिस इज व्हाट, दिस इज T is equal to 0, दिस इज T is equal to 100 सेकेंड्स. 100 सेकेंड्स के बाद कितना हो जाएगा टोटल प्रेशर? 0.6. Now that total pressure will be sum of all of these things, right? So I can write P total is equal to Pi minus P plus P and plus P. करेक्ट है गाइस? Pi minus P हमने ले लिया रिएक्टेंट का, और प्लस P क्या हो गया? प्रोडक्ट का. सो आई विल गेट P total is equal to Pi minus plus P. सही है हाँ या ना? जल्दी बताएं. करेक्ट है गाइस? Yes, sir. ठीक है. नाउ नेक्स्ट थिंग दैट यू कैन सी इज, यहां से आप बता दीजिए P की वैल्यू क्या हो जाएगी? P विल बी इक्वल टू P टोटल माइनस Pi. करेक्ट है हाँ या ना? अरे बोलिए भाई. Yes, sir. ठीक है. So this is the reacted part. This is the reacted part. Now what you need to write, as you can see, this is what, this is unimolecular reaction. तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? KT by 2.303 is equal to log of initial pressure, that means Pi हो जाएगा, राइट? जैसे हम लोग क्या लिखते थे पहले, A नॉट बाई A नॉट बाई A लिखते थे. So A नॉट को क्या लिख सकते हैं हम? This is the same thing, will be equal to log A नॉट का मतलब इनिशियल प्रेशर, ठीक है? इनिशियल प्रेशर Pi डिवाइड बाय द रिमेनिंग प्रेशर. डिवाइड बाय क्या हो जाएगा बताइए जरा? डिवाइड बाय रिमेनिंग प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट कितना है? Pi माइनस P. Pi माइनस P, ठीक है? और P की वैल्यू क्या होती है? log of Pi divided by
PI माइनस P की वैल्यू क्या है, PT माइनस PI, करेक्ट। दिस इज द वैल्यू ऑफ P, देखिए जरा, Yes, sir. ठीक है, सब्स्टिट्यूट किया इसको। नाउ आई कैन राइट दिस विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ PI डिवाइड बाय PI माइनस PT, माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस PI, ठीक है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू log of PI डिवाइड बाय 2PI माइनस PT, ये क्या हो जाएगा, KT अपॉन 2.303। नाउ K विल बी इक्वल टू 2.303 divided by time log of initial pressure, divide by 2PI minus P2। PI और P total आपके पास है, प्लग इन करके K का वैल्यू निकालिए। What is the value of K that you are getting, tell me guys। T की वैल्यू 100 हो गई ना,
Initial pressure is 0.5 divided by 2 into 0.5 minus 0.6. So this will be equal to 2.303 divided by 100 log of 0.5 2 into 0.5 कितना हो जाएगा 1 minus 0.6. This will be 0.4. So इसको क्या लिख सकते हैं 2.303 divided by 100 log of 5 minus log 4. log 5 की वैल्यू क्या होती है? What is the value of log? याद है आप लोग को? नहीं याद है? साथ what is the value of log 5? नहीं याद साथ को. This will be 0.69 minus log 4 is 0.60. ठीक है? This will be equal to 2.303 divided by 100. 0.69 minus 0.6 is equal to 0.9. 0.09. आंसर आया आपका राबिया? No, sir. कीजिए, कैलकुलेट कीजिए. साद आर यू देयर? सादा क्लास में है भी या नहीं है? हूँ सर. कैलकुलेट कीजिए जल्दी, कितना जाएगा आंसर? बस 9 से मल्टीप्लाई करना रह गया. आप you will get this value as 0.002. सर 2 into 10 raised to minus 3. हाँ, ऑलमोस्ट ही मिल रहा. ठीक है, दिस विल बी 2 into 10 to the power minus 3. ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज योर रेट कांस्टेंट. इसके आगे सवाल जो है, they say that what will be rate of reaction when total pressure is 0.65 atm. टोटल प्रेशर कितना है? 0.65 atm. जो चीज ध्यान रखने वाली बस आपके पास है कि एट इक्विलिब्रियम आपके पास क्या है? पी आई माइनस पी, एंड पी इज इक्वल टू व्हाट? पीटी माइनस पी आई. ठीक है, एट इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम का मतलब आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, जब 0.65 प्रेशर हो जाएगा ना, एट दैट टाइम आई कैन से दैट पी आई माइनस पी है. कितना है? पी आई माइनस पी. ठीक है, ऐसे सॉरी,
पहले आपको ये हम समझा देते हैं, ये हम ले क्यों रहे हैं. What will be the rate of reaction when total pressure is 0.658, है ना. So rate of reaction will be equal to K into the concentration of SO2Cl2 to the power 1 because it is first order reaction. Now I can write this as K into the pressure of SO2Cl2. SO2Cl2. And what is the pressure of SO2Cl2? It is nothing but Pi minus P. है ना. The pressure of SO2Cl2, Pi minus P. और जो P आया है हमारे पास, P is equal to what? ये देखिए, P is equal to PT minus Pi. P कितना है? PT minus Pi. टोटल प्रेशर अभी उन्होंने कितना बोला? 0.65 atm. हमने 0.65 atm ले लिया, माइनस Pi कितना था? 0.5. So this will be equal to how much? 0.15. ठीक है. तो प्रेशर ऑफ SO2Cl2 will be equal to Pi कितना था? 0.5 minus 0.15. This will be equal to how much? 0. बताइए कितना आ जाएगा? 0.35 atm. So rate will be equal to, अभी हमारे पास क्या आया? K into pressure of SO2Cl2. K कितना आया हमारे पास? 2 into 10 to the power minus 3. 2 into 10 to the power minus 3 into pressure of SO2Cl2 कितना आ गया हमारे पास? 0.35. 0.35. This will be equal to 0.35 into 2 क्या हो जाएगा? 0.7 into 10 to the power minus 3. अब यहाँ पे जो आपके पास यूनिट होगी, that will be atm per second. This is your answer. 0.7 into 10 to the power minus 3. atm per second. इसको नोट डाउन कर लीजिए. Let me know once you're done. Done, sir. साथ हो गया आपका. Done, sir. चलिए, तो there was this type of question जो कि बचा हुआ था आपका. बाकी everything in chemical kinetics is done. Now tell me आपके स्कूल में क्या कराया गया next? What have they taught? Rabia P Saad. and F block elements. D and F block element. elements. So Saad, what about you? Halo alkenes and halogens. Haloalkane and halorine. Yeah. अच्छा, ठीक है. Rabia, DNF block is completed. Yes, sir, it's done. और उसके बाद coordination chemistry, Yes. that is also done. Yes, sir. And what else is done? That's it. सिर्फ coordinate chemistry last था जो खत्म हुआ. अच्छा, तो बहुत ही ज्यादा तेज नहीं आ रहे आपके स्कूल वाले. Like before summer vacation only they completed all the complete first book. Yes, they wanted to complete the syllabus, so yeah. अच्छा, फाइन. फर्स्ट बुक आपका कंप्लीट हो गया, डीएनएफ ब्लॉक भी कंप्लीट हो गया, कोऑर्डिनेशन भी कंप्लीट हो गया. ओके. तो अब अगला लेक्चर हम लोग क्या करें फिर बताइए. साद, आपको हैलोअल्केन हैलोरीन पढ़ना होगा, राइट?
Yes. अच्छा, आपने सोल्यूशन एटलीस्ट कंप्लीट किया है? बताइए तो जरा साथ। सॉल्यूशंस नहीं, मैंने खुद से या स्कूल में? स्कूल में नहीं। आप रिकॉर्डिंग्स होंगी ना आपके पास हमारे लेक्चर्स की? हाँ सर, जैसे नहीं टाइम देखा है मिलता आपने? है। नहीं देखा है आपने, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो कश्मकश हो गया कहीं पे भी, लेकिन डीएनएफ ब्लॉक नहीं हुआ है, वो मुश्किल हो जाएगी अब, मतलब क्लास के लिहाज से चलना। केमिकल काइनेटिक्स तक हुआ है, उसके बाद आई एम थिंकिंग कि आई विल स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ओनली। चलेगा राबिया आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर स्टार्ट करें, हालोल्किन हालोरीन? यस राबिया, टेल मी। Sure, sir, I don't mind. जी, यू डोंट माइंड, इट्स फाइन, ठीक है। सो halo alkene and halorine we have to start. Sir, is it okay if I check my syllabus and let you know, like what will be coming for the half yearly, so I can हाफ let ईयरली you में know? तो आपका फर्स्ट बुक आएगा पूरा। हाफ ईयरली में तो वो halo alkene halorine, मतलब इतने चैप्टर्स तो नहीं पूछ सकते ना, आधी किताब पूछेंगे मैथ्स टू मैथ्स, राइट? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स तक वो पूछेंगे आपसे। देख लीजिए आप ऐसे सिलेबस देखिए। Yes, just a second. हम्म, Yes, sir, I have haloalkane and haloarine for half yearly. तो you have halo alkene and halorine, चलिए चलिए ठीक, ओके ना, ठीक है। आज सिर्फ बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन हम कराएंगे, देन फिर सैटरडे से विल बी, नेक्स्ट सैटरडे से आप लोग का हालोकेन हालोरीन स्टार्ट हो जाएगा। हालो एल्कीन एंड हालोअरीन। एंड टुडे इज व्हाट, संडे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज आप लोग ये बता दीजिए जरा, बोथ ऑफ यू आर इन इंडिया नाउ ना, राबिया एंड साद? No, sir, I'm in Saudi. अच्छा, यू आर इन सऊदी राइट नाउ, अच्छा, फाइन फाइन। सो सऊदी के हिसाब से अगर हमें सुबह में क्लास लेनी हो, लेट्स सपोज इन मॉर्निंग, व्हाट टाइम डू यू वेक अप? किस टाइम सही रहेगा राबिया? 9, 8, I don't mind. अच्छा, you don't mind early also, okay. And if I take 10 a.m. KSA, ठीक है, 10 a.m. KSA, then 10 a.m. KSA will be what, 12:30 IST, right? है ना? Yes. ठीक, फाइन, ओके। सो ये टाइम ठीक रहेगा, 10 a.m. आई थिंक एवरीवन विल वेक अप, है ना? इतना लेट तो कोई नहीं होता होगा। साथ 10 a.m. इज फाइन KSA के हिसाब से, क्या ख्याल है? 10 बजे उठ जाते थे अगर आप सऊदी में रहते तो? साथ साथ नहीं है क्या क्लास में? योर माइक इज ऑफ साथ। साथ नहीं, हाँ साथ नहीं लगता क्लास में, ठीक। इंडिया में आके लोगों का कनेक्शन बहुत वीक हो जाता है। चलिए, ओके। सो बिफोर स्टार्टिंग haloalkene halorine, आई जनरली आस्क अ वेरी जनरल क्वेश्चन, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली चीजें हम लोग यूज करते हैं ना, उससे रिलेटेड। सो यू विल राइट द चैप्टर्स नेम एज haloalkene halorine। अच्छा, एक सजेशन ये है राबिया, दैट इफ योर कॉपी, कॉपी में कितना पेजेस हो गया आपका? कॉपी खत्म होने वाली है क्या आपकी? No, sir. है सफिशिएंट पेजेस? Yes. कितने पेजेस होंगे अराउंड?
I think more than 50, 80. अच्छा, हाफ ऑफ द नोटबुक इज डन। चलिए ठीक है, दैट्स फाइन देन, इतना काफी है इसके लिए, एटलीस्ट एक चैप्टर तो हो जाएगा। बट अगेन आई विल सजेस्ट इफ यू कैन मेक if you can make a separate notebook for organic chemistry, तो प्लीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सेपरेट नोटबुक बना लीजिएगा, ठीक है? कि सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ही जगह रहे, और पार्ट 1 के लिए एक अलग से नोटबुक रहेगी। बात समझ में आ रही है राबिया? Yes, sir. Okay. चलिए, now write the question. Yes, sir. Can you repeat again what you were saying? I was asking you, is 10 AM KSA टाइम ओके? सऊदी में कितने बजे उठते थे आप? India. नहीं, सऊदी में। Sir, डिपेंड करता, अगर क्या छुट्टी है तो डिपेंड कर? ज्यादा सोऊंगा, अगर नहीं है हाँ, तो छुट्टी में नहीं आया। कितने बजे उठ जाते थे छुट्टी में? छुट्टी में मैं जागता था रात में, तो क्या? 1-2 बजे तक सोता था। फिर उठते कितने बजे थे वो टू बोलिए? नहीं नहीं नहीं, 2 PM तक उठता था मेरा मतलब, सऊदी 2 के। PM दोपहर में? या नहीं, वो ओ, रात में जगता था क्योंकि छुट्टी है बोल के, आई वाज लाइक दैट। नहीं नहीं, अगर आप सऊदी जाइएगा तो फिर 10 बजे तक उठ जाइएगा सुबह क्लास करने के लिए, ठीक है? चलिए, एक सवाल लिखिए, यू विल राइट द चैप्टर्स आप नेम। यस, टेल मी साद। सर, कल क्लास है हमारी 10 o'clock से। कल नहीं है फिर आपको, नहीं मतलब होगी ना, छुट्टी में होगी। इंडिया में भी आप हैं तो 12:30 बजे होगी दिन में, सऊदी रहते तो फिर आपकी सुबह में होगी, लेकिन गर्मी छुट्टियों में हम एक्स्ट्रा क्लासेस लेंगे कुछ उसके लिए, ठीक है? अब सवाल ओके लिखिएगा, सर। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। अभी तो सबको बकरीद का हैंगओवर होगा थोड़ा सा, है ना? अभी उस माहौल से निकले ही नहीं होंगे, तो अभी 1-2 दिन छोड़ के फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। फॉलोइंग एज एलिफैटिक, एरोमेटिक, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, प्राइमरी यानी कि 1 डिग्री बोलते हैं इसको, सेकेंडरी 2 डिग्री बोलते हैं, और टर्शरी। ठीक है? Now, another question. Are you comfortable with this bond line structure? हाँ जी बताएं, राबिया एंड साद। अरे बोलो भाई, आर यू कंफर्टेबल विद दिस बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर? आवाज नहीं आ रही, हाँ सर। है ना? चलिए ठीक है। यस राबिया, राबिया आर यू देयर? सर, कैन यू Yes, sir. आप कंफर्टेबल है ना बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से? Yes, sir. ठीक है, हाँ साद आपकी आवाज आ रही है।
Take 2 more minutes. उसके बाद फिर आप लोग आंसर बताइएगा. डन. राबिया एंड साद. राबिया हो गया आपका? No, sir. नहीं हुआ है. साद जितना कर सकते थे कर लिए. नहीं सर. हाँ सर I forgot some of the definitions. ठीक, कोई बात. नो प्रॉब्लम इन दैट, नो प्रॉब्लम. ठीक है ना. तो याद दिलाने के लिए तो हम सारी Yeah. चीजें लिखे हैं ना. ठीक है. एलिफैटिक एंड एरोमेटिक. ठीक है. सो एरोमेटिक आप समझ लीजिए क्या होता है. एरोमेटिक विल कंटेन बेंजीन रिंग. एरोमेटिक मतलब क्या? इफ देयर इज अ बेंजीन रिंग दैट मींस इट इज एरोमेटिक. ठीक है. और अगर बेंजीन रिंग नहीं है तो क्या हो जाएगा? There's lag. देयर इज अ लैग इन माय वॉइस. फॉर यू आल्सो राबिया. No, sir. नहीं ना. ठीक है. सादा आपकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम है फिर. ठीक है. एरोमेटिक मींस देयर विल बी अ बेंजीन रिंग. इफ द बेंजीन रिंग इज नॉट प्रेजेंट देन इट विल बी एलिफैटिक. तो पहला वाला क्या हो जाएगा बताइए? इट विल बी एलिफैटिक, राइट? Yes, sir. इट विल बी एलिफैटिक. ठीक है. नेक्स्ट, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड. अनसैचुरेटेड का मतलब डबल बॉन्ड होगा और देयर विल बी ट्रिपल बॉन्ड. डबल बॉन्ड डीबी, ट्रिपल बॉन्ड टी. अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं हुआ देन इट विल बी सैचुरेटेड. ठीक है.
Unsaturated means there will be double bond or triple bond. If there is no double bond, no triple bond, then it is going to be what? Saturated. अगर हुआ तो unsaturated. This is aliphatic. और क्या है बताइए? This is saturated. Correct है? Rabia? Yes, sir. And next tell me 1 degree, 2 degree, 3 degree. Yes, Rabia. क्या है? 1 degree है, 2 degree है, 3 degree है. 1 degree. अच्छा, ठीक है. अब यहाँ पे देख लीजिए जरा. 1 2 3 4 इतने कार्बन एटम्स हैं. राबिया, yes or no, please tell me. Yes, sir. Which is the most important carbon atom? क्या लगता है आपको? 1 2 3 4 में सबसे important कार्बन एटम कौन सा है? 3. 3. Now the third carbon atom, ठीक है, जो सबसे important कार्बन एटम है ना, उसको हम बता देंगे बाद में तो डिटेल में, लेकिन अभी के लिए जो सबसे important कार्बन एटम है उसको बोलते हैं अल्फा. क्या बोलते हैं? What do we Alpha. call it? Alpha. Now that carbon is connected to how many carbons? The alpha carbon is connected to, यानी कि वो कितने कार्बन के साथ बॉन्ड बनता है? How many, Rabia? 3. 3. How 3? Direct bonds, directly attached with how many carbons? This carbon is making a bond with this green carbon and this blue carbon only, right? Yes. Rabia, yes or no, please tell me. Yes, sir. है ना? तो how many carbons? 2 carbons, right? Yes, sir. So alpha, when it is directly connected to a atom, is known as beta. तो ये एक आपके पास beta होगी and this is also a beta. तो how many beta carbons, Rabia? 2. तो ये हो जाएगा secondary, that is 2 degree. Okay. Got it? Yes, sir. Hello, I got disconnected. ठीक है, चलिए आप बाकी का वैसे ही करके देखिए. हाँ, आई हैव टू रिपीट इट. कैसे रहेगा इतना दिन? ये जब तक इंडिया में तब तक कैसे रहेगा आपका इंटरनेट? अच्छा, ट्रेनिंग कहाँ है आप इंडिया में? हैदराबाद. हैदराबाद में भी इंटरनेट सही नहीं है. चलिए देखिए, एलिफैटिक आपको समझ में आया साथ? नहीं सर, अच्छा, आप बस थोड़ा सा समझा दीजिए, पूरा याद आ हाँ जाता. बता रहे हैं, बता दे रहे हैं, बता दे, सब कुछ बता दे, थोड़ा थोड़ा क्या पूरा ही बताएंगे. देखिए, अगर बेंजीन रिंग है तो उसको क्या बोलेंगे? जी सर, थैंक यू. सब्सटेंस कैन बी एलिफैटिक और एरोमेटिक हो सकता है. या तो एलिफैटिक होगा या तो एरोमेटिक होगा. उसी तरह से या तो सैचुरेटेड होगा या अनसैचुरेटेड होगा. ठीक है, समझ में आ रही है ना? सिमिलरली अ सब्सटेंस विल बी आइदर प्राइमरी और सेकेंडरी या फिर टर्शरी. समझ में आ रही है? यस आया ना सर. बोले. ठीक है, अब सबसे पहले देखेंगे एलिफैटिक और एरोमेटिक में क्या डिफरेंस है. प्लीज कीप योर माइक ऑन सर, प्लीज कीप योर माइक ऑन. माइक ऑन रखिए आप. ये बहुत ज्यादा ये नहीं लेता, नेट नहीं लेता माइक, ठीक है ना? तो उसकी चिंता ना करें आप. जितना नेट इस्तेमाल हो रहा है उतना ही नेट इस्तेमाल हो. ठीक है. और सर नाउ इफ देयर इज अ बेंजीन रिंग तो क्या बोलेंगे उस स्ट्रक्चर को हम? अगर बेंजीन रिंग है उस स्ट्रक्चर में तो एरोमेटिक हो जाएगा. सही है? समझ आ रही है? हाँ या ना, जल्दी बोले. I can't hear your voice, Saad. I can't hear your voice. ओके. ठीक है. Now, if benzene ring अगर नहीं है तो क्या बोलेंगे उसको? If benzene ring is not there, तो क्या हो जाएगा? पढ़िए. एलिफैटिक. एलिफैटिक. Now, first structure बताइए, एरोमेटिक है या एलिफैटिक है? First structure, पहला स्ट्रक्चर क्या है? एलिफैटिक या एरोमेटिक? एलिफैटिक है. ठीक है. सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में देख लीजिए. अगर डबल बॉन्ड और या फिर ट्रिपल बॉन्ड, इफ देयर इज अ डबल बॉन्ड और अ ट्रिपल बॉन्ड, दोनों में से कोई एक भी हो जाए, इफ देयर इज अ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तो उसको क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड. क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड. और अगर डबल बॉन्ड भी नहीं है, अगर डबल बॉन्ड भी नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है तो क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड. क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड. ठीक है. तो हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? सैचुरेटेड सर. सैचुरेटेड हो जाएगा. ठीक है. अब आते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी. नाउ इन द फर्स्ट molecule I have 1 carbon, 2 carbon, 3 carbon and 4 carbons. Correct है sir? Yes or no? Yeah. Now what do you think, what is the most important carbon atom here? 1 2 3 4 में 3, third one sir. बिल्कुल आसान है ना?
अब जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला कार्बन आता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा। क्या बोलते हैं? अल्फा। व्हाट डू वी कॉल इट? अल्फा। अब ये बताइए, दिस अल्फा कार्बन ये डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच्ड है? डायरेक्ट बॉन्ड इसके टू कितने कार्बन? कार्बन्स। 2 कार्बन्स, राइट? या एक सो ये ग्रीन वाला सेकेंडरी और एक ब्लू वाला। ठीक है, तो ये जो ग्रीन और ब्लू में है ना, इनको हम, जो अल्फा डायरेक्टली कनेक्टेड होता है उसको बोलते हैं बीटा कार्बन। क्या बोलते हैं? बीटा कार्बन्स। हाउ मेनी बीटा कार्बन आते हैं? 2 बीटा कार्बन है तो क्या हो जाएगा? 2 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आ रही है साथ? यस सर। ठीक है, 2 डिग्री हो गया ना। एलिफैटिक हो गया, एरोमेटिक, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी मींस 2 डिग्री, दैट इज सेकेंडरी। सेकंड स्ट्रक्चर बताइए, एलिफैटिक या एरोमेटिक? यस सर। क्या होगा? एलिफैटिक होगा, एरोमेटिक होगा सेकंड वाला? हेलो। आवाज नहीं आ रही है? हेलो राबिया, कैन सर। यू सेंड योर आंसर्स टू माय व्हाट्सएप? एरोमेटिक। एरोमेटिक होगा, ठीक है, वेरी गुड। सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? अनसैचुरेटेड सर, डबल बॉन्ड है। अनसैचुरेटेड, डबल बॉन्ड से है ना, वेरी गुड। अनसैचुरेटेड। अब कोई भी इंपॉर्टेंट कार्बन आइटम नजर आ रहा है आपको इसमें? नहीं। नहीं ना, तो यहाँ पे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का बोलने का कोई फायदा ही नहीं, यहाँ पे कोई डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, अनटिल अनलेस वी हैव अ इंपॉर्टेंट कार्बन दैट इज अल्फा कार्बन, उसके अलावा कोई नहीं। ठीक है, थर्ड में बता दीजिए आप क्या हो जाएगा, एलिफैटिक या एरोमेटिक? थर्ड वाला एलिफैटिक सर। एलिफैटिक। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड? यस सर, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी बोलेंगे अनसैचुरेटेड। इसमें या नहीं? हाँ 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 हाँ, आया आया, आवाज आया, धीरे आया, धीमा आया, आया। जी जी, अब बताएं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कुछ बोलेंगे थर्ड में? थर्ड में इज देयर एनी इंपॉर्टेंट कार्बन साथ? नहीं ना? नो, हाँ ठीक है, हाँ ओके ओके, देयर इज नो आगे इंपॉर्टेंट। बढ़िए आप। ठीक है ठीक है, आगे बढ़िए आप। ये बताइए, एलिफैटिक, एरोमेटिक, फोर्थ वाला, फोर्थ वन? एलिफैटिक है सर। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड। अब इंपॉर्टेंट कार्बन आइटम कौन सा है? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है इसमें। इंपॉर्टेंट कौन सा है? सेकंड। सेकेंड इंपॉर्टेंट है, थर्ड इंपॉर्टेंट है, देखिए जरा। सेकंड सर, सेकंड ना, क्योंकि सेकंड वाला 3 कार्बन से कनेक्टेड है। वो इंपॉर्टेंट नहीं हुआ ना, इंपॉर्टेंस इज गिवन बाय, थर्ड। थर्ड है ना साथ? थर्ड कार्बन इज यस सर, इंपॉर्टेंट ना, थर्ड बिकॉज वन। थर्ड वन। अब ये अल्फा, दिस अल्फा इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू ओनली 1 बीटा कार्बन, है ना? तो क्या हो जाएगा ये? या 1 डिग्री। प्राइमरी। हाँ, राबिया, कैन यू प्लीज सेंड द आंसर्स ऑन माय व्हाट्सएप? राबिया, आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. थैंक यू वेरी मच। ठीक है, सात तो इतना जल्दी थक जाते हैं, वो हो जाता है एकदम बिल्कुल सात का। हाँ, यू गेट टायर्ड वेरी इजीली। व्हाट अबाउट द फिफ्थ वन? सात क्या होगा? एलिफैटिक, एरोमेटिक? सात, फिफ्थ वन? एरोमेटिक। एरोमेटिक। एरोमेटिक नहीं होगा, डबल बॉन्ड बेंजीन है ही नहीं, सर्कल कहाँ है बीच में? नहीं है ना, क्या हो जाएगा? एलिफैटिक होगा। बात समझ आ रही है, हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर, अंडरस्टूड आवाज नहीं सर। आ रही है साथ आप? अंडरस्टूड, ठीक है। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड? या सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड? सैचुरेटेड, ठीक है। सैचुरेटेड। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी? सेकेंडरी। वेरी गुड। इससे बताएं, एलिफैटिक, एरोमेटिक? सिक्स्थ वन? एरोमेटिक। एरोमेटिक। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड? अनसैचुरेटेड। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी? सेकेंडरी। हाँ जनरली, लेकिन एक चीज आपको बता देते हैं हम, जब एरोमेटिक होता है ना, तो इन दैट केस प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी को डिफाइन नहीं करते, बट अगेन वी कैन स्टिल डू इट, देयर इज नो इशू इन दैट। लेकिन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कभी देखने की जरूरत नहीं पड़ती है इफ यू आर हैविंग अ एरोमेटिक कार्बन। ठीक है सर, बस एक बात हम आपको बता दिए हैं। ऑल्दो ओके। ऑल्दो इंपॉर्टेंस नहीं है, बट ये 2 डिग्री है,
सेवेंथ वाला बता दीजिए जरा, एलिफैटिक एरोमेटिक। मैं सर हाँ सेवेंथ वाला आप ही बताइए। एरोमेटिक। वाई एरोमेटिक? बेंजीन रिंग कहाँ है? 5 कार्बन है, बेंजीन रिंग कहाँ है? नहीं है ना, क्या होगा? एलिफैटिक होगा। राबिया आप भी देख लीजिए, एलिफैटिक होगा ना, और Yes, sir. अनसैचुरेटेड। ठीक है, और अनसैचुरेटेड होगा। बात समझ में आ गई? Yes. ठीक है, तो थर्ड, अभी तो बस हमने एक बार आप लोगों को ऐसे ही ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया है कि थोड़ा हम लोग जब अब हैलोरीन के अंदर आए, तो जब व्हेन आई से एलिफैटिक, व्हेन आई से अल्काइल, जब हम इस तरह की बातें करें तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। सो वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आज हो गया, लेकिन चैप्टर को जो स्टार्ट करेंगे हम लोग, चैप्टर को स्टार्ट करेंगे सैटरडे के दिन ही। अदरवाइज व्हाट आई एम थिंकिंग, ठीक है ना, साथ फिर से चलेगा। व्हाट आई एम थिंकिंग इज दैट कि आपके एक्स्ट्रा क्लासेस में हम हैलोल्केन हैलोरीन लगा दें, ठीक है, एक्स्ट्रा क्लासेस के अंदर, और उसके बाद जो आपका रेगुलर क्लासेस है उसमें अल्कोहल, फेनॉल्स एंड ईथर सब करा दें। सो आपके 2 चैप्टर्स मतलब साथ साथ हो जाएंगे, जिसमें बहुत सारे रिएक्शंस ओवरलैप भी करते हैं। सो आई थिंक आई कैन डू दैट। जो भी होगा, आप लोग सुबह में खाली हैं, आप लोग को इंशाल्लाह इत्तला कर दिया जाएगा। एंड बट फर्स्ट वीक में जो ये जो वीक आने वाला है ना, मंडे से तो नहीं, ट्यूसडे या वेडनेसडे से आई विल बी स्टार्टिंग बेसिक मैथ्स। ठीक है, जहां पे बच्चे बहुत ज्यादा परेशान भी होते हैं, और न्यूमेरिकल्स को बेसिकली हाउ टू डू। बेसिक मैथ्स में तो बेसिक मैथ्स पढ़ाएंगे ही, बेसिक मैथ्स इन द सेंस की लॉग वॉग आ जाएगा, उसमें एक्सपोनेंट्स आ जाएगा, एंड बहुत जीरो से लेके हाउ टू डू फास्ट कैलकुलेशन। ठीक है, हाउ टू डू फास्ट कैलकुलेशन। एक छोटा सा आप उसका ट्रेलर देख लीजिए। आई डोंट नो वेदर आई हैव टोल्ड दिस और नॉट, बट फॉर एग्जांपल राबिया, इफ आई आस्क व्हाट इज 212 divided by 5, can you answer it, Rabia, without doing any calculation? No, sir. हम बताएं आंसर क्या होगा? The answer is going to be 42.4। कैलकुलेटर में देख लीजिए। Yes, that's correct. एकदम सही है। आप कोई नंबर बताइए, आप बताइए कोई नंबर। 624 divided by 5. नहीं, 5, 624, 624 Yes, डिवाइड बाई 5. 5, 5 ओनली ना। नाउ इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 124.8, नहीं 124.8। हाँ ठीक है, देखिए तो सही आंसर। Yes, sir, it's correct. ठीक है, आप भी चाहते हैं इस तरह से कैलकुलेशन कर पाए? Yes, sir. ठीक है, तो फिर आइए क्लास में, है ना, मैथ्स पढ़ाएंगे जब आप लोग को, तो फिर आप लोग भी इसी तरह से कैलकुलेशन कर पाएंगे, है ना। Yes, तो sir. अगर आपको थोड़ा सा कुछ और चाहिए, ये तो 5 का हो गया, ठीक है, 5 का तो बहुत आसान है। शाहबीज क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? ठीक है, फॉर Sir, एग्जाम्पल इफ यू, यस टेल मी राबिया। sir, can you also do decimals and stuff like multiplication and division of that? अरे बिल्कुल वही तो कराए ना, वही तो कराएंगे हम, बिल्कुल वही। ठीक है, सो फॉर Okay. एग्जाम्पल अगर हम आपसे पूछें कि व्हाट इज 26 into 1.5, कैन यू डू इट विदाउट एनी कैलकुलेशन, मतलब बिना कुछ किए हुए, लाइक माइंड में मेंटली? No, sir. दिस विल बी इक्वल टू, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, दिस विल बी इक्वल टू 39। देखिए सही है। Yes, sir, it's correct. आप कोई नंबर बताइए, ज्यादा बड़ा नहीं है ना, 1.5 मल्टीप्लीकेशन में बड़ा बोल भी सकते हैं, थोड़ा लगेगा, अदरवाइज टेल मी, कोई भी ऐसा नंबर बताइए। 72 into 1.8. 1.8? नहीं, दिस इज गोइंग टू वर्क, सारे डेसिमल्स के लिए वर्क तो नहीं करेगा ये, है ना। 1.8 कैन टेक अ बिट मोर टाइम, जैसे, लेकिन वो फास्ट हो सकता है ना, फॉर एग्जांपल 1.5 कैन बी वेरी फास्ट। 72 लिखा हमने, और यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, 1.5। सो इसका आंसर यहाँ पे आपके पास हो जाएगा
देखिए सही है Yes, sir. है ना। तो बेसिकली इसमें हम आपको बता देते हैं दो चीज को हमने, है ना, फिर आपकी रात की नींद उड़ जाएगी, तो वो हम नहीं चाहते। 5 से आपको समझ में आया क्या कर रहे हैं? व्हेन आई डिवाइडेड बाई 5 बेसिकली क्या करना होता है? पैटर्न नजर आया आपको या नहीं नजर आया? नहीं आया? No, sir. नहीं आया, देखिए अब आया। Yes, sir. ठीक है, सो यू नीड टू डबल द नंबर्स और एक डेसिमल पॉइंट शिफ्ट कर देना बस आप, है ना। यहाँ पे देखिए 624 का डबल कितना होगा? 1248 और एक डेसिमल पॉइंट इधर कर दिया। बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है, सो एज सिंपल एज दैट। साद हैज जॉइंड, बट साद Sir, जी बताइए sir, राबिया। does it work only if you divide it by 5 or with other नहीं नहीं numbers as well? नहीं, नो दिस इज ओनली गोइंग टू वर्क इफ यू आर डिवाइडिंग बाय 5, है ना। इफ यू आर डिवाइडिंग बाय 5 नथिंग एल्स, ठीक है। Okay, और sir. बेसिकली ये लेकिन धीरे धीरे, लाइक अभी तो 5 के लिए बहुत आसान है। यू कैन ऑल्सो डिवाइड, लाइक इफ एनीथिंग इज बाय 2 इट्स ऑलरेडी वेरी इजी। 1 बाई मतलब अगर 3 से डिवाइड कर रहे हैं तब के लिए, इफ यू डिवाइडेड बाई 4, इफ यू डिवाइडेड बाई 5 का तो कर लिया हमने ना। 1/6 है आपके पास, 1/7 है, 1/8 है, या फिर 1/9 है। 10 से डिवाइड करना तो बहुत आसान होता है, 1/11, ठीक है। तो इन सब का हम सिखाएंगे, ठीक है। ऑब्वियसली इसमें बहुत आसान, जैसे 1/10 इज डिवाइडिंग बाई 1/10 इज वेरी इजी, यू जस्ट नीड टू शिफ्ट द डेसिमल पॉइंट, राइट। लेकिन उसी तरह से 1/2 भी बहुत आसान होता है, यू जस्ट नीड टू हाफ द थिंग। हाफ करना बहुत सबको आता है आसानी से, है ना। और ऑब्वियसली सम ऑफ देम आर गोइंग टू बी अ बिट टफ, बाकी थोड़े इजी होंगे, ठीक है। बट सबके लिए आप मेंटली कर सकते, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, यू कैन डू एवरीथिंग मेंटली, एटलीस्ट ऑल ऑफ दीज डिविजन्स। और इसके अलावा बहुत ज्यादा कुछ डिविजन आता है नहीं, ठीक है। बहुत बार आपके पास 3 से डिवाइड करना, 4 से डिवाइड करना, 6 से डिवाइड करना, 7 से, 8 से, 9 से, 11 से आता है। इतना आप कम से कम दिमाग में रख लेंगे तो आगे आपको बहुत आसानी होगी। इसमें अ बिट डिफिकल्ट इज डिवाइडिंग बाई 7, बट वो भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये सब लेकिन बाद में करेंगे। सो आई वाज सेइंग साथ कि जो नेक्स्ट वीक होने वाला है ना, उसमें तो आई विल बी टेकिंग क्लासेस फॉर बेसिक मैथ्स, ठीक है। देयर विल बी 1 आवर क्लास, और वो 1 आवर क्लास डेली होगा। आई थिंक आई विल स्टार्ट दैट फ्रॉम ट्यूसडे। और बेसिकली उसमें हम क्या पढ़ाने वाले हैं? बेसिक मैथ्स तो पढ़ाएंगे। जैसे बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आता है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव समथिंग लाइक दिस 0.69 डिवाइड बाई 9, हम इसको लिख देते हैं 69 डिवाइड बाई 9 इंटू 10⁻⁻²। तो बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आता कैसे हुआ। साधन रावी आप लोगों को समझ में आ गया कैसे हुआ, Yes, sir. यस है ना। तो बहुत सारे बच्चों को वो नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल ये भी नहीं आता बहुत सारे बच्चों को कि फॉर अगर हमने लिखा 938⁻0 तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमने लिखा 10⁻⁻² तो ये ऊपर जाके हो जाएगा 10⁻²। और अगर हमने लिखा 1/10⁻² तो ये ऊपर जाके हो जाएगा 10⁻²। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे बेसिक से, और उससे पहले भी थोड़ा सा हम बॉड मास करा देंगे कि पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना पड़ता है, उसके बाद अदर्स को, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी केमिस्ट्री में इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए C6H12O6 इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, सो यू आर गोइंग टू डू लाइक दिस ना, 6 into 12 प्लस 12 into 1 प्लस 6 into 16। तो अब इससे पहले मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करना है ना। उसके बाद जो नंबर्स आएंगे उनको क्या कीजिएगा, आप ऐड कीजिएगा। समझ में आ रही है? आया ना, Yes, sir. है ना। ठीक है, तो यहाँ से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। आई थिंक 4-5 क्लासेस में आपका बेसिक मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा। इसमें दोनों चीजें, एक तो मैथ्स कैसे किया जाता है एंड हाउ टू डू जनरली फास्ट कैलकुलेशंस कैसे कर सकते हैं, ठीक है, दोनों चीजें तो उसमें आपके पास। लेकिन आई होप ऑल ऑफ यू नो कि द स्ट्रेंथ इन लर्निवियो बैचेस इज 8, राइट। 8 से ज्यादा बच्चे आपके पास नहीं होंगे बैचेस में, लर्निवियो के रेगुलर बैचेस में। बट लेकिन जो हम बेसिक मैथ्स की क्लास कराएंगे उसमें यू कैन होपफुली देयर विल बी मोर अटेंडेंस, कुछ ज्यादा बच्चे भी हो सकते हैं, है ना, बिकॉज वी आर डूइंग एक्स्ट्रा क्लासेस। रेगुलर क्लासेस में आपके पास 8 से ज्यादा बच्चे नहीं होंगे, लेकिन अभी जो बेसिक मैथ्स कराएंगे ना तो उसमें तो 11th के बच्चे आने चाहिए, है ना राबिया। Yes, sir. सही है, 10th के भी आ सकते हैं जो 10th में पढ़ रहे हैं, है ना। 10th के बच्चे भी आ सकते हैं, ठीक है। तो उसमें कुछ ज्यादा बच्चे रहेंगे, जब ज्यादा बच्चे रहते हैं तो थोड़ा सा मजा भी आता है कि आंसर जल्दी जल्दी आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, कैसे आ रहा है, ठीक है। चलिए
दैट्स इट फॉर टुडे। और हैलो एल्किन हैलोरीन आपका स्टार्ट होगा सैटरडे से। आज के लिए इतना ही, एंड देन वी आर गोइंग टू मीट ऑन सैटरडे। ओके, तब तक के लिए केमिकल काइनेटिक्स वगैरह सब कुछ रिवाइज करके रखिएगा, ठीक है। Okay, थैंक यू sir. वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम। Thank you, sir. थैंक यू, Yes. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
Am I audible? Hello. Yes, am I audible? Yeah, yes. Okay. So we are going to start the physics, the first chapter of physics. You're in class 10th, right? Yeah. Okay. So I'm going to start this, what we say, light. We have to study about the reflection and refraction. Reflection and refraction. So I think you are aware of this term light. Can you define light or explain what is light? Light is a source of energy, Light is a source of energy and reflection is the bouncing back of light. no. Okay. Bouncing back of light. So basically, uh, you just give the definition of the light, which is not complete. So we can say that light is a form of energy. Light is a form of energy which enables us, which enables us to see the objects around us, see the objects around us. So basically, if you are in complete dark room, you will not be able to see anything because there is no light. If there will be any light, then it will help us to see the object around us. There will be reflection that helps us to see the object around us, and without light, there will be no reflection. So the complete definition of this light is it is a form of energy which enables us to see the object around us. Yeah, in this way, we can define light. Now, the next important term for this chapter is your reflection of light. We studied this terms in class 8th as well. So you did define it correctly, like bouncing back of light is called a reflection of light. Bouncing back of light, bouncing back of light is called a reflection of light. And in details, you can uh, explain this in the way when an incident ray, do you know what is incident ray? Yes. Yeah, can you tell me what is incident ray? Um, the incident ray is equal to the Reflected ray? yeah, the reflected ray. No. There is a slightly difference. Not incident ray. Basically, incident angle is equal to reflected angle. Angle of incidence is equal to angle of reflection. That comes from the laws of reflection. So basically, if I'm asking you what is incident light, so I'm gonna explain this with the help of a diagram. Since you defined it, reflection of light, like bouncing back of light is called a reflection of light. And if you want to explain it, the definition. So basically, I'm gonna take uh, red surface. Just wait a minute. Sometimes it abruptly. Uh, are you able to see this thing? Yes, I can. Yeah. So the red line is this is your mirror. This is your mirror. Let's say, let's forget it for a while and take an example. This is wall. This is wall, and you are standing here, and you are just
you are throwing ball on this surface of the wall, what will happen? If you are throwing a ball at this angle, the ball will go like this. Yes or no? Can you feel it? Yes. If you are throwing the ball at this angle, the ball will go like this. And if you are throwing the ball at 90-degree like this, can you tell me what will be the path to reflect it or to come back from that surface? It will, I It think, will it come back. will on the same path, right? Yeah. If you're able to feel it, just let me know. And if you are not, you can do this experiment at home with the ball. Yeah. Okay. So you can see it will come back. So basically, concept we can easily apply in our day-to-day life. Basically, this concept we can apply in reflection of light. Let's say if you are if you are focusing a light in this way or on this path, the another path that it will go will be like this. What I want to say is that this ray that is going on the surface is called incident ray. Is called incident ray. Are you getting my point? This was about ball that we were playing. Now come to this. This is a mirror surface in which if you are in the incident ray is this, you can see this is your incident ray. The incoming rays are called incident ray, and this is the reflection. This is called your reflected ray. Reflected ray. There is difference between incident angle and incident ray. This is the path on which the light is traveling. This is incoming rays, which is called incident ray, you can call it, and this reflected ray is outgoing, or you can call it outgoing, like after reflection. So this is your reflected ray. Now I'm going to draw a normal on this. The place where incident ray and reflected ray meet, we are going to draw a normal. Are you aware of this normal? What is normal in this? What is this term normal called in this physics? I don't know the definition, but I Okay, know normal is what? What do you understand by this term normal? Normal is basically, this normal we draw is basically 90-degree from the surface of the mirror. Are you getting my point? yes. So this is your norm. Okay. Now, I think you are now aware of this incident ray, reflected ray, yes or no? And this is your normal. Okay. Now, there are two more terms that are similar to this incident ray and reflected ray. That is incident angle. You can call it incident angle or angle of incident, or we can call it angle of incidence or incident. Okay. Or the another term is your reflected angle. We can call it a reflected angle or angle of reflection. Angle of reflection. Angle of reflection. So this is your angle I that we denote for incident angle, and this is your angle R that is denotion or we symbolized for angle of reflection. Now, what is this angle? So basically, the angle between normal and incident ray. You know what is angle? The vertex where 2 points meet. We calculate the angle. So basically, the angle between normal and incident ray is called angle of incidence or incident angle, or the angle between reflected ray and normal is called angle of reflection or reflected angle. Are you getting my point, Rifa? Yes. Yes, understood. So basically we can define this definition, and the concept is very, very important for you. What is this? This is your angle between incident ray
and normal, and normal. And this is your angle between reflected ray And not. and normal, and normal. So basically, this is the concept. Now, do you know what does we call it? What about this angle? This angle is basically called grazing angle. We call it grazing angle. So basically what happens, or what is grazing angle? The angle between either, understand it, focus here, it's very important. The angle between mirror surface and incident ray, either the angle between mirror surface and incident ray, or the angle between mirror surface, the angle between mirror surface and reflected ray, that is called grazing angle. Are you getting my point? Yes. So basically what I want to say is that this and this angle are equal. The grazing angle are equal, always equal in this even surface of the mirror. So I'm going, can you repeat it again? The grazing angle, I don't think it's there in the textbook. Okay, just take care of this. Sometimes there are some questions that has been asked before 5 years or 10 years. So it's not bad to have some concept which is not in the textbook. Okay. Yes. Okay. So basically now we are going for the laws of reflection. So let me ask you some questions. Are you, do you have any doubts from this concept? What is light? What is reflection of light and all? No. Okay. I'll ask you some questions after teaching the concept of laws of reflection. Laws of reflection. So there are some which is basically there are two terms which is very important for this chapter, light. The first one, you are aware of reflection of light, and the another one which is very important is refraction of light. I think you have. Now laws of reflection we are going to talk about. There are two laws of reflection. There are two laws of reflection. The first one you already told me, but only the term was wrong. The first one is Angle we of can, reflection is equal to angle of incidence. very good. The angle of, just wait a minute. Are you able to see the screen? Yeah. Yeah. The angle of incidence is equal to the angle of reflection. This is the first law. Whatever will be the angle of incidence, it will be equal to angle of refraction. We can write it in short form as well. And the second one, which is also very, very easy, we can write the incident ray. I'll also explain with the help of our diagram. The incident, just wait a minute. The incident ray, the normal to the mirror, the normal to the mirror. At the point of incidence, at the point of incidence, and the reflected ray, and the reflected ray all lie in same plane, all lie in same plane. So basically, if I'm going to explain this with the help of a diagram, which is very easy to explain, you can see
This is your mirror. This is what I call is mirror. This is your incident ray, and this is your incident ray, and this is your reflected ray. So where is the normal? You are going to take line like this, which should be must be perpendicular from perpendicular to the mirror. Okay. Now you can see this is your incident ray, this is your reflected ray, and this is your normal, which lie in the same plane. These three lines lie in the same plane. That is what says the second law. And what about the first law? This is your angle of incidence, and this is the angle of reflection, which must be equal. This is what first law says. Is that clear? Yes, it is clear. Now I'm going to ask you a very easy question. Let's say this is your mirror. Okay, question number 1. And just wait a minute. I should not use that. Are you able to see the screen now? Yes. Now you can see this is your incident ray. Let's say this is your reflected ray. Okay. This is your incident ray, this is your reflected ray, and this is what is your normal. This is your normal. You can put it up to this as well. Now see, if I'm gonna ask you, this is your 35-degree angle. Can you tell me what will be the angle of reflection? 35. 35. That is understood. Very good. Now, can you tell me what is this angle? Let's say it is X, and this angle, let's say it is Y. Will you be able to find angle X? The angle X is the grazing angle, right? Yes, this both are a grazing angle, and it should be equal. You can prove it by yourself as well. 35. No, not 35. Just forget about Y. Can you calculate X? Okay, 1 second. Yeah, just take your time. No need to be in hurry. Is it 70? Not 70. Not 70. See, what is this angle? Can you tell me what is this angle? It's 90 degree. 90 degree. And you can see what is this angle? 35 degree? Yes or no? So what will be this angle plus this angle will be equals to 90 degree, right? 35 degree plus X is equal to what? 90 degree. Are you getting my point? Yes. So X will be equal to 90 minus 35, which will be equal to 55 degree, I think, right? Yeah. And now, if you are going to again apply the same concept here, what will happen? Let's say this is your Y. So 35 degree plus Y again will be equal to what? 90 degree. So it will be 55. Again 55 degree. So whenever you are going to calculate the grazing angle, it will be equal because these are equal. These are equally divided from 90 degree. So this will also be equally divided, right? Are you Yes. getting my point? Oh, very good. Moving to the next question. This is the surface, mirror surface. Let's say this is your mirror. This is your incident ray. This is your reflected ray.
and this is your normal. It might not look equal, but they are equal because my drawing is not that good. Let's say this is your 40 degree. You are going to calculate angle X, angle Y, angle Z. Please do it. Okay. Let me know when you are done with this. What is the value of X, Y, and Z? But X is going to be 50. That's good. What about Y? Will also be 50. Very Because good. it's Angle of. What about Z? 40. Very good. So don't go by the formula, like don't go by if I told you grazing angles are equal. So initially you should apply the concept. Are you getting my point? Don't go like this. 40 degree, 40 degree, they are equal. Instead, you should apply the concept like 40 degree. Then this is your 90 degree. So 90 degree minus 40 degree, that is equal to 50 degree. And by the law, you know that angle of incidence is equal to angle of reflection, 50 degree, 50 degree. And again, if you are going to calculate the Z, you are again going to apply the 90 degree is equal to Z plus 50 degree. That will give you 40 degree. Okay. Initially, you should do like this, applying the concept, which is very important. Now, I'm going to give you a very easy question. Let's say one more thing I want to say is that there is, see, this is the incident ray. There are 4 mirrors, or take it 3 mirrors. This mirror, this mirror, this mirror. This is incident ray, and this is the reflected ray. Drawing is not good. So let me try. Just wait a minute, please. Let's say like this. Okay. Let's say this is your incident ray for this mirror, and a reflected ray for the left one mirror, and this reflected ray will be incident ray for the bottom mirror, and this ray will be reflected ray for the bottom mirror, and incident ray for the right mirror. And again it will go like just wait a minute. You didn't draw the reflected ray. I'm drawing, not able to do it clearly. Basically it will go like this. Okay, now I'm going to draw the, this is your normal, this is your normal, this is your normal. Now what I'm going to do is very simple. I am going to give you this angle, which is let's say, what is this? Not 45 degrees. Let's say this is your 30 degree. You are going to calculate this X, then Y, then Z. Then you are going to tell me what is A, B, C, D, then E, then F, then G, then H. Please do. Okay. I'm waiting. Okay, so X and Y will be 60 degree and Z will be equal to 30 degree. Very good. So X will be equals to 60 degree, Y will be equal to 60 degree, right? And Z will be equals to 30 degree. Now, can you tell me what is A, B, C, D? It's the same, right? It's the same, right? Like what? A will be equal to what? 30. No, not, it will not be equal to 3. Do you know alternate interior angle? I think you have studied this in geometry of class 9th.
lines and angles, alternate interior angle. Are you aware of this? Yeah. What is this alternate interior angle? If there is two parallel line and there is a line which is intersecting each other, so this angle will be equal to this angle, and this angle will be equal to this angle, which is called alternate interior angle. Yes or no? Yes. Now you can see this line, which is normal for the left mirror, is parallel to the mirror which is below or on the bottom. Are you getting my point? So this y will be equal to a. Yes or no? Yes. So if this is 60, then a will also be equals to 60. Basically, y will be equal to a. By we can apply alternate interior angle. Got it? Yes or no? It Are kind of you looks. able to understand? Okay. I'm going to again explain it, and there are two methods to calculate this a as well. So I'm going to take this as this. You can see this is your normal, okay, and Okay. this is the mirror which is present on the bottom, and the line is like this. Yes or no? Yes. This white line, and this is what I called you. I called it y, which is 60 degree. And you know that since it is normal, it will be a straight line, and the mirror, which is also in a straight line, which is parallel to this. So if this y will be equal to a, because it says it is alternate interior angle. Yes or no? Yes. It will be So 60. 60, or you can apply with another method. By you can see this. Just wait a minute. Let me show you with the different color. This is a mirror. Sorry, triangle. Can you see this? This is a triangle. Yes or no? Yes. So this is, I'm gonna take it out. This is a triangle in which you can see this Z is, you told me that this is your 30 degree, and you can see this mirror are perpendicular to each other. Perpendicular is also called normal, like normal, which is 90 degree, right? Yes or no? I just took out this as an as a triangle. Are you getting my point? Yes. So you can see this is your 90 degree and this is your A. So what is the sum of Okay. interior angle of a triangle? What is the sum of interior angle of a triangle? 180 degree. Have you remembered this? Yes or no? So this 130 plus 90, which is 120 degree, plus A is equal to 180 degree. So if you are going to calculate A, it will be 60 degree. Are you getting my point? Yes. So if So, you, yes, yeah. okay, how Are you, about for D then? how about Angle D. angle D? We will talk about angle D. Are you able to understand this? Yeah, I understood. Okay. Okay. If you have got A, what will be the value of B? Can I just Yeah, calculate? yeah. What will be the value of B? Again, you can apply for like you can see I'm going to represent this one. You can see this is like just let me slide it down. This is the mirror, the bottom mirror. A ray comes like this and goes like this, and this is your normal, right? You just calculated A to be 60 degree. Now you need to calculate B, C, D. 30. Is it 30? 30 degree it will be. If it is 30 degree, can you tell me what is C? What will be the value of C? It will also be 30 degree. Yeah, So can you tell me because what will be the value of D? it will be 60 degrees. 60 degree. Very good. If you have got the value of D at 60 degree, can you tell me the value of E, F, G, H? Okay, 1 second. Okay. Just 30.
of what? The value angle of what? EFG. Hmm. 30° is the value of EFGH. It's the value of angle E. That's great. This is 30° because you know this is your 60°. So F should be 60° by alternate interior angle, or you can apply the sum of interior angle of triangle. So 60°, 90°. So it will be 30°. So what will be the value of F? That is 60°, and the value of G 60°, and the value of H will be 30°. Yes or no? Yes. Okay. So this is a concept of a reflection of light, and since it is a trial class, I will see you in the next class, in which we will talk about the spherical mirrors. Okay. Can Do you have? teach about ray diagrams in the next class? Yeah, why not? Ray diagram of mirror or lens. Mirror, the concave corner. Okay, we will talk about that. Before that, I will ask some questions from the spherical mirrors, like what is concave mirror, convex mirror, and the terms about that, like principal axis, focus, radius of curvature. Okay, virtual focus, real focus. So please be prepared for that. Then we will talk about the ray diagram, which is very easy. We can easily cover in one class. Okay. And you also know about the rules to draw the diagram. No, sorry, rules to draw the image, right? Like if you have a concave mirror like this, and this is your pole, this is your focus, this is your center of curvature. So if a ray goes parallel to principal axis, it will pass through focus. This rule. Are you aware of this? Yeah, but actually, I want to like I'm not that good in this ray diagrams. I didn't understand that very well. Okay, So okay. okay, Got it. So what do you want to say? So yeah, it will be good if you teach me ray diagrams because I'm finding okay, that hard. okay, before what I was saying is that this ray diagram will be very easy if you are able to understand the rules to draw the ray diagrams. Like if a ray goes parallel to the principal axis, it will pass through focus. If a ray diagram directly passing through center of curvature, you know what will happen? Whenever a ray passes through center of curvature, it will strike the mirror at 90°. And you know what? When you are throwing a ball at 90° on a wall, it will retrace its path. So there are 3 to 4 rules. You just need to go through that before Yeah, I to draw all the ray. the one which is Okay, there then in the no problem. I have Got already it. learned it, So in the next, okay, but got it. If you have learned it, no problem. In the next class,